Assalamu alaikum. This is Dr. Nimra Mehman again with another topic, maternal collapse, Green Top Guideline 2019. Maternal collapse is defined as an acute event involving cardiopulmonary or central nervous system resulting in reduced or absent conscious level at any stage in pregnancy and up to 6 weeks after birth. So, any acute condition in pregnancy at any stage of pregnancy and up to 6 weeks after birth causing reduced or absent conscious level is maternal collapse. Causes are hemorrhage, thromboembolism, sepsis, drug overtoxicity, amniotic fluid embolism, cardiac disease, anaphylaxis, and eclampsia. We will discuss all of them separately. Most common cause of maternal collapse is hemorrhage. Placenta previa, placental abruption, postpartum hemorrhage, uterine rupture, ruptured ectopic pregnancy. These are the major causes of maternal deaths due to hemorrhage. Thromboembolism is another cause of maternal death, and appropriate use of thromboprophylaxis has improved maternal morbidity and mortality. अगर एंटीनेटली डीवीटी के लिए स्कोरिंग की जाएगी प्रॉपरली तो वी कैन प्रिवेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. Amniotic fluid embolism, it presents as a collapse during birth or labor or within 30 minutes of birth. Amniotic fluid embolism is specifically during labor or birth or within 30 minutes after birth, or pulmonary embolism within day or after that, आफ्टर डे आफ्टर बर्थ और उसके बाद कभी भी अगर एम्बोलिज्म हो रहा है तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, बट ड्यूरिंग बर्थ इट इज़ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म मोस्टली. यूके डेटा पब्लिश करता है एन इंसिडेंस ऑफ 1.7 per 100,000 maternities और पेरीनेटल mortality rate is 67 per 1,000 total births. Cardiac disease is an overall cause of indirect maternal death. Cardiac disease, psychiatric diseases, anesthesia-related complications, these are all indirect causes of maternal death. Majority are due to cardiac diseases, secondary in women with no previous history. Main cardiac disease of maternal death are ischemia and sudden arrhythmia. Sepsis. Definition of sepsis, actually it's a criteria in which temperature is more than 38 degrees Celsius or less than 36 degrees Celsius, heart rate more than 90 beats per minute, respiratory rate of more than 20 breaths per minute, WBC count of more than 12,000 or less than 4,000, suspected or present source of infection, lactic acidosis, systolic blood pressure of less than 90 or a systolic blood pressure drop of 40 millimeter of mercury of normal pressure. So this is the criteria of sepsis. It's again has been a recognized complication of maternal morbidity and mortality. Substandard care continues to be featured in the cases that results in the death. In Pakistan, other than hemorrhage, the second most common cause of death is sepsis. Bacteremia can be present in the presence or absence of pyrexia or raised white blood cell count and can progress rapidly to severe sepsis and septic shock leading to collapse. Now, the organisms involved in the sepsis are mostly the most common is group A streptococcus, then group B streptococcus, pneumococcus and E. coli. Drug toxicity should be considered in the cases of collapse. Two main drugs in the obstetric practice that give rise to the toxicity: magnesium sulfate and local anesthetic agents, lignocaine. Toxic effects occur due to excessively high plasma concentration due to systemic absorption, and symptoms include lightheadedness, sudden followed by sedation, circumoral paresthesia or twitching. Convulsions can occur but in severe cases, like in severe form of toxicity. And in severe toxicity, there can be a loss of consciousness with or without tonic-clonic convulsions and cardiovascular collapse. Anaphylaxis is a severe life-threatening, generalized or systematic hypersensitivity reaction resulting in a respiratory, cutaneous and circulatory changes leading to collapse. Commonly जो triggers होते हैं, drugs, can be a latex, animal allergens or foods. Incidence of severe perioperative obstetric anaphylaxis is between 1 and 3.5 per 100,000 with mortality of about only 1%.
Likely anaphylaxis can we can how we can say that this is the case of anaphylaxis. So these are the three criteria which should be met: sudden onset and rapid progression of symptoms, life threatening airway, breathing or circulation problems, skin or mucosal changes like flushing, urticaria, angioedema. These are the three criteria for the anaphylaxis. Other causes are eclampsia, intracranial hemorrhage, metabolic and electrolyte disturbances, hypoglycemia, hyponatremia, or due to hypoxia. Keeping in mind changes during pregnancy that affects the resuscitation. कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हिंड्रेंस हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा रिससिटेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता. एओर्टोकेवल कंप्रेशन, ग्रेविड यूट्रस की वजह से आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन वेनस रिटर्न कम हो जाता है इन सुपाइन पोजीशन. जब पेशेंट सीधी लेटी हुई होगी आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन वेनस रिटर्न कम हो जाएगा. सुपाइन हाइपोटेंशन होगा. कार्डिक आउटपुट इज रिड्यूस्ड 20 to 30% इन सुपाइन पोजीशन. नॉर्मली प्रेगनेंसी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं उसमें 40 to 50% कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है, बट इन सुपाइन पोजीशन 20 to 30% कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है. नॉर्मली भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन 26 तक हम कहते हैं कि लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में रहें, करवट से लेटें, क्योंकि उसकी वजह से उनका सुपाइन हाइपरटेंशन बीपी लो होता है और उनको सांस लेने में भी मसला होता है. रेस्पिरेटरी चेंजेस में इंक्रीज्ड टाइडल वॉल्यूम, डिक्रीज्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज़ की एक कॉमन कंप्लेन होती है कि सांस लेने में मसला हो रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. उसके लिए हम कहते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, लंबे गहरे सांस लें. डिफिकल्ट इंट्यूबेशन इज ड्यू टू वेट गेन, लैरेंजियल एडिमा एंड लार्ज ब्रेस्ट जो इनहिबिट करती हैं वर्किंग प्लेस को. एस्पायरेशन, pregnant women are at increased risk of aspirations and regurgitation secondary to progesterone effect and due to raised intra-abdominal pressure, जिसकी वजह से मेंडलसन सिंड्रोम भी होता है. मेंडलसन सिंड्रोम is due to aspiration of the gastric contents. Circulation, increase in cardiac output and hyperdynamic circulation of pregnancy may cause rapid loss of blood, especially from uterus, because uterus receives the 10% of the cardiac output at term. For resuscitation, वही कॉमनली जो कहीं पर भी आपको BLS में बेसिक लाइफ सपोर्ट में सिखाया जाता है ABCD अप्रोच, इसमें भी यही करना है. ABCD अप्रोच लेनी है. रिलीव ऑफ एओर्टोकेवल कंप्रेशन, मैन्युअली हमने हाथ से डिस्प्लेस करना है यूट्रस को लेफ्ट साइड और लेफ्ट लेटरल टिल्ट करना है 15 to 30 डिग्री, जिससे एओर्टोकेवल कंप्रेशन रिलीज हो जाएगा. दिस परमिट्स इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन इन द सुपाइन पोजीशन इन द इवेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट. इसके दो फायदे हैं, एक तो एओर्टोकेवल कंप्रेशन कम हो जाएगा, दूसरा हम चेस्ट कंप्रेशन सही कर पाएंगे. एयरवे इंट्यूबेशन विद कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब्स शुड बी परफॉर्म. एक्सपीरियंस्ड एनेस्थेटिक अगर हमारे पास हैं तो वो करेंगे. Breathing, supplemental high flow oxygen should be administered 10 liter or 15 liter as soon as possible to counteract the rapid hypoxia. Bag और mask ventilation या insertion of simple supraglottic airway भी कर सकते हैं. जब तक intubation हो तब तक हम ये measures ले सकते हैं. Despite clear airway, if there is no breathing, chest compressions should be commenced immediately. पहले हमने response check किया, फिर हम स्टेप बाय स्टेप गए, एयरवे, ब्रीदिंग, उसके बाद हमने सर्कुलेशन देखी. अगर हमारे पास चेस्ट कंप्रेशन के बाद भी नहीं एयरवे नहीं आ रही, ब्रीदिंग नहीं आ रही है, तो 30:2 पे हम कंप्रेशन से स्टार्ट कर देंगे. 2 वाइट बोर्ड कैन्युलास इंसर्ट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल. देयर शुड बी अग्रेसिव अप्रोच टू वॉल्यूम रिप्लेसमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो कॉशन शुड बी एक्सरसाइज इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रीक्लिम्सिया एंड एक्लिम्सिया. इन प्रीक्लिम्सिया एंड एक्लिम्सिया फ्लूइड लोड जो होता है वो 80 ml पर kg के हिसाब से होता है. लेकिन वैसे हमने अगर हमारे पास कोई कोलैप्स में पेशेंट है तो हमने फ्लूइड बैलेंस उसका सही रखना है. एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड बाय स्किल्ड ऑपरेटर कैन असिस्ट इन द डायग्नोसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंसील्ड हेमरेज. सेम डिफिब्रिलेशन एनर्जी शुड बी यूज्ड एज इन द नॉन प्रेग्नेंट लेवल्स. इसमें कोई चेंजेस नहीं है. ओके,
हमने जो यूके प्रोटोकॉल्स हमें दिए हैं उन्हीं एल्गोरिथम्स को हमने फॉलो करते हुए जाना है। एंड रिससिटेशन एफर्ट्स सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड सीनियर एनेस्थेटिस्ट इन कंसेंसस विद कार्डियक अरेस्ट टीम के बाद ही हमने डिसकंटिन्यू करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट कॉल फॉर हेल्प। आपने आसपास जितने लोग हैं उनको हेल्प के लिए बुलाना है। रिस्पांस चेक करना है, पेशेंट से उसका नाम पूछना है, उसको हिला के पूछना है, उसको नाम से बुलाना है अगर नाम पता है तो। मैन्युअली डिस्प्लेस करना है यूट्रस को ऑन द लेफ्ट साइड। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स कर रही है असेसमेंट कंटिन्यू रखनी है, अगर रिस्पॉन्स नहीं करनी है तो आपने ओपन करना है एयरवे। ब्रीदिंग को चेक करना है, अगेन हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, और असेस करना है 10 सेकेंड्स के लिए फॉर ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग आ रही है तो उसको लेफ्ट लेटरल करके अपनी असेसमेंट फिर से कंटिन्यू करनी है। अगर पेशेंट ब्रीद नहीं कर रही है, सांस नहीं ले रही है, अगेन सीपीआर करना है हमने। 30 कार्डियक कंप्रेशंस देन 2 वेंटिलेशंस। रिपीट करना है रेशो को, और ये कंटिन्यू रखना है जब तक आपके पास हेल्प नहीं आ रही है, एडवांस लाइफ सपोर्ट नहीं हो रही। पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन in women over 20 weeks of gestation, अगर there is no response to correctly perform CPR within 4 minutes of maternal collapse, अगर 4 मिनट्स के अंदर अंदर पेशेंट रिवाइव नहीं हो रही या उसके बाद भी आपने रिससिटेशन किया है तो 5 on the 5th मिनट आपने पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना है। PMSC should not be delayed by moving the woman, it should be performed where maternal collapse has occurred। इसके लिए हमें सिर्फ एक स्कैल्पल चाहिए, क्लैम्प्स चाहिए और ब्लेड चाहिए। ये बिना विदाउट एनेस्थेसिया भी हो सकता है। ऑपरेटर शुड बी यूज्ड इन द इंसिशन विच विल फैसिलिटेट द मोस्ट रैपिड एक्सेस। दिस में बी अ मिड लाइन इंसिशन और अ सुप्राप्यूबिक ट्रांसवर्स इंसिशन, जो भी कन्वेंशनल होगा वो परफॉर्म करेंगे। ऑनगोइंग मैनेजमेंट में डिपेंड्स अपॉन अंडरलाइंग कॉज ऑफ कोलैप्स। कॉज को हमने देखना है, ट्रांसफ़र करना है पेशेंट को टू अ क्रिटिकल केयर एरिया। सीनियर स्टाफ भी इन्वॉल्व होना चाहिए इन अर्ली स्टेज विद अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस। In maternal hemorrhage, secondary to antepartum hemorrhage, the fetus and placenta should be delivered promptly to allow the control of the hemorrhage। जब तक डिलीवर नहीं कराएंगे तब तक हेमरेज को हम ना लोकलाइज कर पाएंगे और ना ही उसको सोर्स को बंद कर पाएंगे। In case of massive placental abruption, cesarean section may be indicated even if the fetus is dead to allow rapid control of hemorrhage। Intravenous tranexamic acid significantly reduces mortality due to postpartum hemorrhage। Yeah, this is an algorithm taken from Duhart's. In case of large APH, where the signs of shock are visible, pallor, tachycardia, pain may be absent or bleeding may be concealed. Concealed bleeding, placental abruption और intra-abdominal bleed में होता है, is painful, while revealed bleeding from placenta previa or cervix or lower genital tract can be painless. Again, call for help, left lateral tilt, check airway, give 100% oxygen, get IV access, 14 gauge 2 cannulas should be inserted, and take 20 ml of blood for CBC, clotting screen and cross match. If patient is in shock, give warmed crystalloid 0.9% normal saline and colloid as rapidly as needed while awaiting for blood. Listen for fetal heart sounds. If baby is alive, immediate delivery. Cesarean section under general anesthesia. If no, then death. If no heart sounds, confirm fetal death with the ultrasound and exclude placenta previa. If placenta previa or major abruption or ruptured uterus is there, cesarean section under again in GA. If no placenta previa, then we can induce labor. If bleeding continues, we will watch for APH after delivery. When in case of shock, when we are managing shock, if blood is available, we'll transfuse patient blood as soon as possible, and we'll keep our monitoring intensive. Urinary catheter, early measurement of BP, pulse, temperature and oxygen. In case of PPH, when we are witnessing signs of shock, first we will follow the ABC protocol again. पेशेंट को 2 IV कैनुलास लगाए, CBC क्लॉटिंग स्क्रीन क्रॉस मैच कर दिया जब तक उनको फ्लूइड्स लगाए. If blood is available, then we'll transfuse her. Meanwhile, we'll see if uterus is contracted or not. If uterus is contracted, we will take her to the theater and do examination under anesthesia. If RPOCs are there, we will remove them
and give her antibiotic. If genital tract trauma, repair that tear and will do vaginal packing. If there is uterine inversion, then reduce it. But if uterus is not contracted, which is most of the time the most common cause of PPH is uterine atony, rub up the uterus by manual compression, retrieve the clots, give 10 units intocinone IV stat, and infusion of 40 units in 500 ml normal saline over 4 to 6 hours. Misoprostol of 600 microgram 3 pessaries into the rectum. After that, hydrostatic ballooning. अगर उसके बाद भी मैनेज नहीं हो रहा, then we'll go for the step Wheelinch and then stepwise devascularization. Last resort is hysterectomy. For uterine rupture, we will follow the ABC protocol accordingly. Establish the IV line. We'll do pulse, BP, urine output monitoring. Patient को transfer करेंगे in the theater after informed consent. Hysterectomy की consent लेंगे उससे. If rupture occurred during labor, low transfer sensation for better exposure and good repair. अगर trauma involved है, pathology uncertain है, तो we'll give the midline incision for good exposure and better repair. For thromboembolism, intravenous unfractionated heparin is given. Initial treatment for massive pulmonary embolism with cardiopulmonary compromise. Mostly the management of amniotic fluid embolism is supportive only. Early involvement of senior staff and experienced staff, obstetricians, anesthetists, hematologists is essential to optimize outcome. So the next is sepsis care bundle. The most common mnemonic of sepsis care bundle is 3 in, 3 out. It should be applied immediately or within 6 hours to improve, which shows to improve survival rate. Measure the serum lactate levels, obtain blood culture and culture swab, spread antibiotic administration, administer broad spectrum antibiotics within first hour of recognition of severe sepsis. In the event of hypotension or the lactate levels are more than 4 millimole per liter, begin rapid administration of initial minimum 30 ml per kg के हिसाब से crystalloids देते हैं within 3 hours of diagnosis. Once adequate volume replacement has been achieved, vasopressin or any inotrop should be used to maintain the mean arterial pressure of more than 65 millimeter of mercury. If a patient is unresponsive to all this treatment, we can give steroids, maintain oxygen saturation at more than 94%, and transfuse if hemoglobin is less than 70 gram per liter. In case of cardiac diseases, after successful resuscitation, cardiac cases should be managed by expert cardiology team. In cases of drug overtoxicity, magnesium sulfate drug of overtoxicity can be managed by 10 ml of 10% calcium gluconate or 10 ml of 10% calcium chloride by slow IV injection. If local drug toxicity is suspected, first of all, immediately stop that drug. Lipid rescue should be used in cases of collapse secondary to local anesthesia toxicity. Intralipid 20% should be available. Treatment of cardiac arrest with lipid emulsion consists of intravenous bolus देंगे of 20% 1.5 ml per kg के हिसाब से over 1 minute followed by IV infusion. सबसे पहले 1.5 ml per kg हमने 20% intralipid दिया IV followed by infusion maintenance 15 ml per kg per hour. In the cases of anaphylaxis, all the potential causative agents should be removed. ABCD approach, assessment, resuscitation should be followed. Treatment of anaphylaxis is 500 microgram. 0.5 ml is given intramuscularly. In the ICU settings, इसकी dilution थोड़ी कम करके हम IV भी दे सकते हैं. But in the ICU settings, adjuvant therapies are chlorpheniramine 10 mg दे सकते हैं, hydrocortisone 200 mg, IM और slowly IV भी दे सकते हैं. Outcome for the mother and baby. Outcome for the mother and baby depends on the cause of collapse, gestational age, access to emergency care, survival rates being poorer if collapse occur out of the hospital. In maternal cardiac arrest, maternal survival rates are over 50% have been reported. Who should be on the team of the
basic life support in pregnancy. In addition to a general arrest team, there should be also a senior midwife, an obstetrician, an obs anesthetist in the team in cases of maternal collapse. Senior obstetricians and senior anesthetists should be called at the time of cardiopulmonary arrest. Neonatal team should be called early if delivery is likely antepartum collapse of over 22 weeks. Where the woman survives, a consultant intensivist should be involved as soon as possible. So again, we have this maternal collapse algorithm. First of all, हमने देखना है safe environment and stimulate and assess for response. नाम लेंगे, पेशेंट से बात करने की कोशिश करेंगे. अगर पेशेंट रिस्पॉन्स देती है, मैनुअल डिस्प्लेसमेंट और लेफ्ट lateral tilt, call for help, assess breathing, pulse, blood pressure, fetal heart rate, regularly assess the using muse, identify cause of collapse and direct the treatment. If she doesn't give any response, we'll call for the resuscitation team. Meanwhile, open airway and check for obstruction if there is any obstruction. Assess for breathing for up to 10 seconds. If breathing is normally, turn her to the recovery position. Check, assess breathing, pulse, PP, heart rate again. Again assessment करेंगे. अगर नहीं होती, look for the chest movement. Listen for the breathe sound or the feel of the air nostrils पे. If नहीं है breathing, start CPR. Manual displacement और left lateral tilt के बाद CPR 30 compressions to ventilation until defibrillator monitor attach होता है. Mouth to mouth only अगर कोई airway adjoint available नहीं है. To attempt at ventilation to minimize the interruption to the chest compression. Chest compression रोकनी नहीं है. Then we'll attach the defibrillator. Assess करेंगे rhythm. डिफिब्रिलेटर्स जो आते हैं उनमें वो हमने सिर्फ ऑन करना होता है और वो खुद ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है. जब वो शॉक वेव दे रहा होता है तो पूरा बताता है कि क्लियर करें वे को. फिर हमने क्लियर करना होता है, खुद चेक करना होता है, बोलना होता है कि वे क्लियर करें ताकि सब वे क्लियर करें. फिर हम उससे असेस करेंगे रिदम को. एसिस्टली इमीडिएट CPR करना है दोबारा. अगर पल्सलेस वेंटिकुलर ट्रेकिकार्डिया है तो वन शॉक सेम एज नॉन प्रेग्नेंट लेवल्स और फिर CPR करना है. और ड्यूरिंग CPR IV एक्सेस, हाई फ्लो ऑक्सीजन, इंट्यूबेशन एंड कंटिन्यूस चेस्ट कंप्रेशन देनी है. और मीनवाइल साइड टू साइड ये सारी चीज़ें भी होती रहेंगी. करेक्ट रिवर्सिबल कॉजेज, गिव एड्रेनलिन every 3 to 5 minutes. Consider atropine, magnesium or amidrone. Thank you. This is all about the maternal collapse. Hope you will all like it.